हाय शुभम, आज भी तुम सबसे पहले आ गए हो। हाय निखिल। ओके, आई एम स्टडिंग फ्रॉम यकीन 2.0। This money is really in a bad condition, so I'm fixing it by pasting it with a sellotape. इसकी कंडीशन में सच में कंडीशन ही हो गई है। अगर अर्जुना बैच चाहिए होगा तो बता देना, मेरे पास है। अर्जुना तो नीट के लिए नहीं है ना, आई थिंक 11th के लिए है ना वो तो, या फिर 12th के लिए है। तुम लोग इतना एक्सपेंसिव बैचेस ले पाते हो। हाय माइंड फॉग। MBBS से नीचे तो BDS ही होगा ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। ओके 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 शुभम। फिजिक्स कौन पढ़ाते हैं वहाँ पर, चुना पर? सलीम सर पढ़ाते हैं क्या? गुड मॉर्निंग माइंड फॉग। राजवंत सर। राजवंत सर, नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं पता उनके बारे में। इस बार मैंने सेव तो किया, लेकिन सेव करने से ज़्यादा, अगर मेरे पास 4000 होता ना, अगर मैं अच्छे से सेव करती तो, अगर मेरे ग्लासेस ना टूटते तो मेरे पास 2000 एक्स्ट्रा होता। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी ज़रूरी था। इट्स ओके माँ। हाँ प्रांजुल, हाय। PW से ही पढ़ रही हूँ। हाँ, लेकिन मेरा बैकलॉग काफ़ी है। प्लीज़ टेल मी। ओके निखिल, यकीन 2.0 में फॉर फिजिक्स आई एम फॉलोइंग सलीम सर, एंड बायो का कोई लेक्चर्स नहीं देख रही, केम का भी नहीं देख रही, लेकिन मैं उससे पढ़ूंगी, उनसे पढ़ूंगी। उनका नाम है अमित महाजन शायद, क्योंकि मैंने उनसे पहले पढ़ा था ना, तो मेरी वाइब उनसे मैच हो जाती है, तो मैंने सोचा है कि मैं अमित सर से ही पढ़ूंगी। फिज़िक्स का तो मैंने स्टार्ट कर दिया सलीम सर से पढ़ना।
इंश्योरेंस ले लिया करो लेंस का। आई नो। कौन भरे मंथली? व्हाट आर यू डूइंग मैम? क्या कर रही हूँ? बेच ही रही हूँ। आई एम जस्ट सिटिंग माइंड फॉग। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट? सब्सक्रिप्शन लिए हो क्या? किस चीज़ का? यकीन 2.0 का? नहीं लिया है, वो किसी एक और इंसान के। मुझे हर बार ये एक्सप्लेन करना पड़ता है, इस बार मैं नहीं बोल रही। ओके, मैंने नहीं लिया है। करना है सब। हाय अर्जुन। कौन सा चाहिए? आई थिंक बायो चाहिए ना, अपार्ट फ्रॉम दिस टू। वैसे कल मैथ्स भी है तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। पता नहीं मुझे ऐसा भारी भारी सा लग जाता है जब भी मैथ्स आता है। और केमिस्ट्री का भी 3 पोर्शन कंप्लीट करनी है, 3 चैप्टर शायद। आप ना एम्स नर्सिंग का काम ना दिया क्या? आपने एम्स नर्सिंग का काम ना दिया क्या? काम मीन्स तुम शायद ये कहना चाह रहे हो कि मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप किया कि नहीं किया। क्या तुम्हारा क्वेश्चन ये है क्या? अगर ये है तो हाँ, मैंने फॉर्म नहीं फिलअप किया क्योंकि सिक्किम में सेंटर नहीं है। हमें WB जाना होता है, वेस्ट बंगाल जाना होता है एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने एक बार फॉर्म फिलअप किया था, आई थिंक 2000 रुपीज़ बेकार में चला गया क्योंकि सेंटर तो यहाँ पर था ही नहीं। फिर भी मैंने फिलअप किया था। बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं जब जाऊँगी तो और ज़्यादा खर्चा होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया, नहीं दिया। लेकिन मैंने फॉर्म फिलअप किया था तब। आप नीट वाले हो क्या? हाँ, नीट वाली हूँ। अरे ये नीट को तुम लोगों ने क्या बना दिया? चाय वाला, नीट वाला, समोसे वाला। चाहिए सेकंड फ्लोर पर है। चाय सेकंड फ्लोर पर है। सिक्किम की कट ऑफ कम है। हाँ, कट ऑफ कम है यहाँ पर, लाइक 223 पर भी मेरी फ्रेंड को अच्छा खासा कॉलेज मिला था तब। हाँ, मैं कितनी बार बोलूँ, मैं जनरल हूँ, ऊपर से मुझे स्टेट कोटा नहीं मिलता है। मैं थक ही जाती हूँ एक्सप्लेन करते करते। मैं इंडिया के किसी भी स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ओके शुभम, तुम जा रहे हो तो तुम जा सकते हो। अब मैं क्या करूँ, रोक के तो नहीं रख सकती ना। हाँ, गैंगटॉक में ही हूँ, लेकिन अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट हो गया है। पहले मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था गैंगटॉक था, अभी नया चीफ मिनिस्टर ने कुछ और कर दिया है। सॉरी। हाँ, मैंने हैप्पी डेंट को ना लिप्स पे चिपका दिया। I scored 45 marks, but okay, this person is calling now.
एक मिनट, हाँ मैं अभी रिप्लाई नहीं कर सकती, मैं इसको पहले बताऊँ कि मैं लाइव सेशन कर रही हूँ। हाँ सही तो है निखिल, तुम्हें जो सही लगे वही करो, क्योंकि यू हैव टाइम। 20 में तो हम लोग एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं ना, जो हम लोगों के लिए बेस्ट होगा हम लोग वही चूज़ करेंगे। डोंट सेटल फॉर लेस। वाई स्टेट कोटा नहीं मिलता, मैंने ये पहले भी मेंशन किया है ना, मेरे पेरेंट्स इंडियंस नहीं हैं, दोनों ही पेरेंट्स। दिस बस, अगर मैं कॉल रिसीव करूँगी ना तो स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगा, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं करूँगी।
हम सेशन 1 स्टार्ट करें। मैं सिक्किम से हूँ वानी, लेकिन अब तुम बात मत करना, ओके? क्योंकि ये सेशन में ना अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? पाक्योंग एनआरसी उडी ऑर्किड्स दिखा दो। एग्रीकल्चर में तुम्हें जानबूझ के वो नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरा घर जहाँ पर है वो गैंगटॉक से क्लोज है इन कंपैरिजन टू पाक्योंग, लेकिन मैं फिर भी पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में ही आती हूँ, क्योंकि अभी के गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कर दिया है। एनीवेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ओके? 30 मिनट का मैंने लगा लिया है टाइमर। गुड लक एवरीवन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट। The third state declared itself as the National Assembly in France. The Declaration of Human Rights was signed in 1982. Nation of a long struggle for human dignity was signed by most countries of the world. 1928. False. This is 1948. Okay. Legendary women participated in. Participate. Answer the following question in 1 or 2 sentences. What is the two guiding principle of democracy? A very famous quote by Abraham Lincoln describes democracy as the government of the people, by the people, for the people.
Democracy offers people the choice of how they want to be governed and by whom they want to be governed. In other words, it allows people to participate in functioning of the government. Equality and freedom are two guiding principles. Okay, equality and freedom are two guiding principles of democracy. What are the two guiding principles of democracy? Okay. Equality and freedom are the two guiding principles of the democracy. What is representative democracy? Representative democracy was a form of indirect democracy where people democratically elected government officials to make decisions on their behalf. Representative democracy was a form of indirect democracy where people democratically elected government officials to make decisions on their behalf. Okay, so this is 542. Let's go to a B. Name the two bills by which the power of English monarch was curtailed. Name the two bills. Okay. Rebirth, Renaissance. A significant milestone in the development of democracy was a document called the Magna Carta. A significant milestone in the development of democracy was a document called the Magna Carta, which was passed in 1215 CE in England. It paved the way for the creation of the law-making body called Parliament. The nobles of England forced the reigning monarch of the time, King John, to sign this historic document, which stated that written laws held a higher power than the king. The influence of the parliament increased gradually. The powers of the monarch were further curtailed by the Petition of Right and the English Bill Right. Okay. The two bills by which power of English monarch was curtailed are Petition of Right, so that is 1628 CE, and the English Bill of Right. Right, proceed. Petition of Right, okay. Bill of Right. Who authored the American Declaration?
क्या हाइड्रोजन electrolytes. H2O2, H2, H2O2, H2O2. H2O gives H2 plus O2. 2 is a 4. O2. These conduct electricity, okay. Non-electrolytic. Glucose, okay. This is acidic. This acidic alcohol. Neutral. NeUTRL, neutral. What happens to an acid or a base in a water solution? Do acid produce ions only in aqueous solution? Let us test this. 3 approximately. Do acids produce ions only in aqueous solution? Let us test this. Take about 1 gram of solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4. Preparation of HCl gas. Take about 1 gram of NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4. Preparation of HCl gas. Take about 1 gram, ये तो कर लिया था ना, नहीं किया था, NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4. Sodium chloride test tube, proper containing concentrated H2SO4, pair of tongs. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? Salt plus base. Carbon dioxide or hydrogen gas. Test the gas about successively dry and wet blue litmus paper. In which case does the litmus paper changes color? Test the gas evolved successfully with a dry and wet blue litmus paper. Okay. On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas, HCl solution? Judge from evidence. Infer, okay.
Dry HCl gas does not. Okay, HCl gas है बोलो उधर से. NaCl plus H2SO4. Two SO4 salt plus what happens when acid or base in a solution? NaSO4 HCl. HCl gas, HCl gas. Test the gas about successfully with the dry. On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl? Does not exhibit acidic property as it comes as its ions as its ions are not dissociated. HCl solution exhibit property acidic property exhibit acidic property. Ions are dissolved in water. If the climate is very humid, you will have to pass the gas produced through a guard tube, drying tube, containing calcium chloride to dry the gas. This experiment suggests that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water. HCl plus H2O, H3O plus Cl minus. Hydrogen ion cannot exist alone, but they exist after combining with the water molecule. The hydrogen ion must always be shown as H plus or hydronium ion H3O plus. We have seen that acid give H3O plus or H plus aqueous ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. NaOH solid H2O Na plus OH minus. Okay. POHK plus OH minus. Mg 2 plus 2OH minus. Okay. Bases generate hydroxide ion in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. All bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolves in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste or touch them, as they may cause harm. Which of the base in table 2.1 are alkalis? Okay. Now, as we have identified that all acids generate H plus and all bases generate OH minus in aqueous solution, aqueous medium, we can view that neutralization reaction as follows: acid plus base HX. Metal, non-metal, salt, HOH, H2, okay, H plus OH minus H2O. Let us see what is involved when water is mixed with an acid or a base. Take 10 ml water in a beaker. Add a few drops of concentrated H2SO4.
Take 10 ml of water in a beaker, add a few drops of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly. Swirl. Hilaw, no. Add a few drops of concentrated H2SO4. Touch the base of the beaker. Is there a change in the temperature? Exothermic. Is this an exothermic or endothermic process? Exothermic. Yeah. Repeat the above activity with sodium hydroxide Ale and record the observation. Both are exothermic. Okay? The process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic one. Okay, the process of dissolving acid or base in water is highly exothermic one. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly towards stirring. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. Hey. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. हम लोगों का फर्स्ट स्लॉट ना कंप्लीट हो गया है. ब्रेक ले सकते हो. ओके. इट्स मी ने क्या बोला है? ईमा बोला है. ओके. हाय, इट्स मी. मैं थोड़ा सा यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद विल टेक अ ब्रेक. ओके. Process of dissolving an acid and base in water is a highly exothermic one. Okay. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash. Okay. This is not important, but just what is added to the concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. The glass container may also break due to excessive local heating. Look out for the warning signs. On the can of concentrated sulfuric acid and the bottle of sodium hydroxide, process called dilution, and the acid or the base is said to be diluted. Mixing an acid or base with the water results in decrease in the concentration of the ion. Is called a dilution and the acid and base is said to be diluted. Okay, हो गया, इतना ही था. 10 मिनट का ब्रेक ले. उसके बाद ना मुझे थोड़ा और भी करना है और उसके बाद ही फिजिक्स पढ़ूंगी. एक्सक्यूज मी. आई थिंक कोई नहीं पढ़ रहा है ना आज. तो पढ़ने वाले लोग नहीं आए शायद. ओके, ब्रेक लिख देती हूँ. ब्रेक से ज़्यादा ना आई थिंक मेरा नेट भी स्टेबल नहीं है. नहीं तो है. BREAK ब्रेक 10 मिनट. कर दिया है. पिन कर दिया है ब्रेक. तुम लोग भी ब्रेक ले सकते हो. ओके.
मेरे पास वो बुक है लेकिन ना सर पर पेपर का तो था। Option 3, section A3. Section A3. बोल रही हूँ